So previous class we have discussed about, we have started the discussion about black body and Ferris black body. After that we have discussed, I told what is black body. Who can tell me in one line what is black body? Yes. Sir, anything that is not visible and absorbs light Not and with the body which absorbs all radiations falling on it at any temperature or any certain time. the body which absorbs The body. all the heat radiations incident on it is called as a black body. Okay. Next, black body, actually nobody in the universe is a perfect black body. Then I told you lamp black, and another one is also your Ferris black body. They are almost 99.9% black body. But up to that much we have discussed. But today we'll discuss about what? Emissive power, spectral emissive power. One important thing is, गोटे अच्छी गोटे समस्ते कहती जी भल नेता सी भल दाता, मीन्स जी भल निए सी भी सेमती भल दिए. ओके, नेता जी दाता सी. तो ब्लैक बॉडी हूँ गोटे बॉडी जी कि सब हीट रेडिएशंस गुड़ा को अब्जॉर्ब करके नहीं गला. यदि से नहीं गला, सी भी सब हीट रेडिएशंस गुड़ा को आउथरे कोन करिवो, हमकु दे दबो. जी भल नेता से भल दाता, से सब हीट रेडिएशंस आउथरे हमकु दे दबो. तले दे दबो, आमे तो कोन कहबा, एमिट करिवो. केते बेले दबो ना, तमे जदि ताकू गोटे एनवायरनमेंट रखिबो जोटी की टेम्परेचर तार कंपैरिजन रे कम थिबो, तार कंपैरिजन जदि कम टेम्परेचर वाला गोटे एनवायरनमेंट ताकू रखिबो, तले से हीट रेडिएशन से छाड़ीबा स्टार्ट करिवो. फेरी जो बॉडीटा डिजाइन करथिले बोली तुमको पूर्व क्लास रे मु कहितली, फेरी को ब्लैक बॉडी एमती जो फेरी को ब्लैक बॉडी थिला, जो एठी गोटे छोट होल थिला, जो पट होल देकी हीट रेडिएशन सब एंटर करथिला, पुनी आउथि सेही होल देकी सब हीट रेडिएशन बाहर को पळे आसी ता भितरु. All heat radiations will come out. Okay, so I'm discussion करिबा एठी emissive power. सब प्रकार वेवलेंथ आसीबो, स्टार्टिंग रेंजिंग फ्रॉम 0 to infinite से सब रेडिएशंस बतौन एमिट करिबो. So we'll discuss here first spectral emissive power. But मु काहे के वर्ड यूज करू छी स्पेक्ट्रल के, मते कहि परिबो? Why I'm using the word spectral? Who can tell me? Spectral means it's related to light, but particularly Visible. wavelength. Spectral means related to wavelength. Different wavelength को अरेंज करके तांकर ऑर्डर अनुसार रखिबा को कहंती स्पेक्ट्रम बोली कहंती. स्पेक्ट्रम, कलर स्पेक्ट्रम, समस्ते नाटा सुनिथिबो, कलर स्पेक्ट्रम. ओके, तेनो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर से तो सब हीट रेडिएशन से एमिट करे, बट सब हीट रेडिएशन कोन से समान समान एमिट करिवो. मु जदि कहबी से सपोज 100 नैनोमीटर एथरु के, मु जदि कहबी 200 नैनोमीटर एथरु केते एमिट करिवो, 101 नैनोमीटर एथरु केते एमिट करिवो. तो सब हीट रेडिएशंस गुड़ा से अलग अलग तार एमिट करिवो, अलग अलग क्वांटिटी रो हीट रेडिएशन से एमिट करिवो ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. तो हमर गोटे क्यूरियोसिटी आसला, हम जानिया को चाहू छे गोटे पर्टिकुलर वेवलेंथ, ए वेवलेंथ रो लंबडा से केते हीट रेडिएशन से एमिट करिवो. What is spectral emissive power? Like the amount of heat or the heat energy by a body
the heat energy radiated by a body per unit area, per unit time, the heat energy radiated by a body per unit area, per unit, for a particular wavelength, for a particular wavelength is called, for a particular wavelength is called spectral emissive power. It's called spectral emissive power. Okay, but a particular wavelength. ताला हम सिंबल कौन लिखिबा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर पई ई लैम्बडा मु तळे लैम्बडा लिखिले लैम्बडा स्टैंड्स फॉर द पर्टिकुलर वेवलेंथ से जो वेवलेंथ रा हमें हीट रेडिएशन से स्टडी करिबा से पर्टिकुलर वेवलेंथ रा मु सिंबल यूज कली ई लैम्बडा गॉट इट total emissive power. Total emissive power. हमें क्या टोटल एमिसिव पावर बोली कहबा टिके गैस कलो टोटल एमिसिव पावर कोन हेतबो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर जदि गोटे पर्टिकुलर वेवलेंथ हला तो टोटल एमिसिव पावर कोन हेतबो for all wavelength. So write the same definition. खाली से definition रे लास्ट को जो हमें लिखे छे for a particular wavelength तमे से जगह खाली लिखिबो for all wavelength. For all wavelength खाली से जगह लिखिबो. On total emissive power. Total emissive power. First lecture ना spectral emissive power. समझी it total emissive power. Okay. What I told, the heat energy radiated by a body per unit area per unit time for all wavelength. all wavelength. For all wavelength. Total emissive power. Total emissive power is E. Okay. E lambda होची गोटी wavelength पाई but E होची सबु wavelength पाई. But सबु wavelength तो से समान समान रेडिएट कर नथिबो. तले मे केमती बाहर करबा टोटल एमिसिव पावर केते हबो देखो तार डेरिवेशन ता केमती हबो E लैम्बडा D लैम्बडा रो इंटीग्रेशन ता फार्मूला ता या तुम जानि छ जोटी वैल्यू अकाउंट करियो पड़े इंटीग्रेशन करियो पड़े तनो एठी E E लैम्बडा D लैम्बडा रे इंटीग्रेशन और वेवलेंथ रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इनफिनिट माने सब वेवलेंथ एथरे इंक्लूड हला हेले हमको टोटल एमिसिव पावर मिलिबो गोटे ब्लैक बॉडी केते रेडिएट करूछ ओके को वेवलेंथ ता बेसी रेडिएट करबो तो को वेवलेंथ ता कम रेडिएट करबो ब्लैक बॉडी रो यदि एम्प्टी सिचुएशन यदि को वेवलेंथ ता टिके कम रेडिएट करबो को वेवलेंथ ता बेसी रेडिएट करबो तले हम कोन करबा से सिचुएशन रे लेट्स ड्रॉ ए ग्राफ गोटे ग्राफ टे ड्रॉ करबा हम हला कोन ग्राफ ड्रॉ करबा का भीतर हम ग्राफ ड्रॉ करबा को वेवलेंथ रो से केते रेडिएट करूछ टू अंडरस्टैंड दैट ओनली
Let's draw a graph. रेडिएट करूछ ताले ताको कोन कहंती जो ग्राफ हम ड्रा करिया पे जाउछि ब्लैक बॉडी कणा रेडिएशन कर्व ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जो कर्व की इतनी इंपोर्टेंस अछि फिजिक्स रे से कर्व इतनी इंपोर्टेंस अछि से कर्व गोटे न्यू फिजिक्स तैयार कर देला फिजिक्स को एक कर्व टा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देला ओके तो समस्त लेख गइली न्यू फिजिक्स तैयार कर दो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व गोटे न्यू फिजिक्स तैयार कर देला कौन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व न्यू फिजिक्स तैयार कला देखो समझते कौन न्यू फिजिक्स से तैयार कला कौन एक कर्व एक्चुअली एपटे हम नबा ई लैम्बडा एपट नबा लैम्बडा माने गोटे पर्टिकुलर वेवलेंथ रो से केते एनर्जी रेडिएट करूछ पर यूनिट एरिया असला ए बडा कर्व असला देखो दिस टाइप ऑफ कर्व हला ए कर्व रे कोन हला एटा एक्सपेरिमेंटल कर्व ब्लैक बॉडी नेले तार रेडिएशंस मान को डिफरेंट वेवलेंथ रो नै के हम ग्राफ ड्रा करले एटा गोटे एक्सपेरिमेंटल कर्व बट ए कर्व को थ्योरेटिकल तो बुझिया को पड़िबो ना हम एक्सपेरिमेंट करके जहां ऑब्जर्वेशन पाई गेले सेरा काहे की होउची who will explain that one theory so से एक्सप्लेन करिया पे ए ग्राफ टा साइंटिस्ट मन को बहुत कष्ट करिया पड़थिला लेफ्ट साइड ग्राफ टा को जने साइंटिस्ट एक्सप्लेन करले राइट साइड टा को जने एक्सप्लेन करले देखला को लेफ्ट राइट माने मिसी पारोनी तो आउ जने साइंटिस्ट से आसिले से पे कल तो नुवा फिजिक्स थ्योरी हला ए कर्व नुवा फिजिक्स थ्योरी कर दितला 1905 रे कि से महान लोक ये नुवा फिजिक्स आरंभ करले डू यू नो द नेम इन 1905 Sir Einstein. Max Planck. Yes, sir. मैक्स प्लैंक तांकर क्वांटम थ्योरी देले ए कर्व को एक्सप्लेन करिया पाई सेठो आरंभ हला क्वांटम थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन दिस कर्व सेठो क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट हला फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स हां सेठो स्टार्ट हला 1905 रु फिजिक्स बिकम मच मोर डिफिकल्ट ता पूर्व जो फिजिक्स थिला ताको क्लासिकल फिजिक्स बोली कहंती तम मन कर मने थिबा तुमको काइनेमेटिक्स पढेला बेले मैं कथा कहिथि क्वांटम मैकेनिक्स हला रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स सो क्वांटम फिजिक्स रा आरंभ करिथिले मैक्स प्लैंक 1905 ठीक है तो ये लागो कोन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व हमें ए कर्व टा ଗୋଟେ पर्टिकुलर टेंपरेचर when the black body is at a particular temperature then this curve is drawn when the black body is at a particular temperature then this curve is drawn okay temperature T1 temperature को ड्रा करा है तापर कोन हला न जते बेले हमें टेंपरेचर टिके सपोज अलग अलग टेंपरेचर हमें कर्व टा को ड्रा करबा देन व्हाट विल द सिचुएशन then हम अलग अलग टेंपरेचर कर्व टा ड्रा करबा then what will be the situation right so let's draw the curve in different temperatures T1 temperature okay so ये कर्व टा ड्रा करा टेंपरेचर बट ई टेंपरेचर को जिंस मार्क कर तमे अच्छा कोन तुम ऑब्जर्व कला मते कहला लेस वेवलेंथ वाला बेसी एमिट होची No, sir. मोर वेवलेंथ वाला हाई वेवलेंथ वाला बेसी एमिट होची No, sir. ताले को वेवलेंथ रो बेसी एनर्जी एमिट करूची ब्लैक बॉडी व्हिच वेवलेंथ Sir मझीटा Cheap. माने मीडियम वाला वेवलेंथ ताले हम गोटे एमती सिंबल दे दवा ताको देखो लैम्बडा एम बट यूज कर ले सिंबल होता है लैम्बडा एम तो लैम्बडा एम इज व्हाट इज लैम्बडा एम क्या मतलब करो लैम्बडा एम कौन स्टैंड्स फॉर व्हाट is it maximum wavelength Yes, sir. Yes, sir. no
No, sir. एटा गोटे कॉमन मिस्टेक पिला माने बेले बेले कोन करन ताको मैक्सिमम वेवलेंथ बोली भाबी कि मैक्सिमम लैम्बडा एम देखंती तो एम फॉर मैक्सिमम ताको मैक्सिमम वेवलेंथ बोली कहि जानती सो लैम्बडा एम इज नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ तो लैम्बडा एम कोन लैम्बडा एम इज द wavelength corresponds to which wavelength that corresponds to which energy emitted is Maximum. maximum wavelength corresponds to which energy radiated is maximum जो wavelength रो सब maximum energy radiate हेछि सेटा को lambda m symbol मनेछि हला lambda m ओके तले ठीक है ओके मु गोटे काम करछला हायर टेंपरेचर रे बतन टेंपरेचर का आउट के हाई करी मु ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर सेम ब्लैक बॉडी बट टेंपरेचर एबे थिला मानकर जहा भी हो मन सपोज 4000 केल्विन थिला हला मु ताको 4500 केल्विन करके देखिया कर्व ड्रा करिया कर्व जे ड्रा करा हला से एमिति सिचुएशन आसला देखो मुटे भले कर दोची सेमी सिचुएशन आसला कर्व ओके टिके मार्क कला बर्तन लैम्बडा एम रो अवस्था कोन हेछि कैन यू मार्क लैम्बडा एम टेंपरेचर हायर हेला एटा होछि T1 टेंपरेचर एटा होछि T2 टेंपरेचर जोठी कि T2 ग्रेटर देन T1 right but what happened here what happens to lambda m Decrease. lambda m is decreasing but the temperature is increasing हला गोटे काम करबा अच्छा आउट के हायर टेंपरेचर ड्रा करछि in the decreasing order lambda m is displacing in the decreasing order when the temperature is increasing this is T3 temperature hope all of you completed this diagram समस्त ड्रा कर देला yes sir so what you marked in this curve कर्व तमने कोन मार्क कला टिके पूर्व तुम कोन कहली ना जेमती टेंपरेचर इंक्रीज करी करी जाउची सेमती लैम्बडा एम कहूची Decrease. decrease करछि जो कथरे को हम एते सहज रे कर्व को देखि देले जने साइंटिस्ट तांक से एति जिंस जानिबा पई बहुत परिश्रम करिसंती आ लास्ट को से एई कंक्लूजन ता देले जो कथरे को हम डिस्कशन करले आ तांकर ना माने ये लॉ रो ना हला से जो लॉ ता देले वेरी इंपोर्टेंट लॉ Wien's displacement law से लॉ रो ना कोन हला Wien's displacement law ओके कर्व समस्त हे गला yes sir समस्त हेडिंग दे Wien's displacement law तो कौन है Wien's displacement law लिखो the wavelength corresponds to maximum energy emitted the wavelength corresponds to maximum radiation the wavelength corresponds to maximum radiation is inversely proportional to absolute temperature the wavelength corresponds to maximum radiation is inversely proportional to absolute temperature okay inversely proportional to absolute temperature
তাহলে কোন হলো এটা lambda m inverse proportional to t. The lambda m into t is equal to constant. Lambda m into t is equal to one constant. Okay. And what is that constant? What that constant is called? कौन से constant को? Sir, Wien's constant. Wien's constant. Like a B is called as Wien's constant. Okay. It is called as Wien's constant. What is its value? 2.89 into 10 to the power minus 3. Unit मध्ये কি কৰিব? Constant ର unit কি কৰিব? Simple. Lambda t. Lambda t. Tell me the unit. Meter Kelvin. Kelvin. Meter into Kelvin. This is Wien's displacement law. Got it? So now everybody understood Wien's law. Okay. But this law is a very important law. Why it is very important? Why very popular law this is? Because this law will help us to find the temperature of distant stars. Temperature of distant stars we can find by the help of Wien's law. How we'll find temperature of distant stars? Who can give me the idea? See, only this is the formula, then nothing else. Nothing else, only this is the formula. But who can tell me how can you find the temperature of distant stars? Anybody? How can you find? Distant stars, they are emitting radiations or not? Yes, sir. Yes, So sir. we'll capture their radiations. We'll capture their radiations, right? When we capture the radiations, study the radiations, which particular radiation is coming maximum, then we'll get it. That this radiation is coming maximum. We must get it. If we study the radiations for a particular interval, then we can able to get it or not. Suppose in one day, how many the radiations what are coming up, which wavelength, we'll study the radiations. Then from that we will get which wavelength is emitted maximum or not. Once we get lambda m, then the temperature easily you can find. Yes. You got lambda m, put in this formula. It's a very good numerical. If this type of numerical will come in exam, then it's a very easy one. But only thing is, you should know you have to remember the Wavelength. formula. Lambda mt is equal to constant. You have to only remember the formula. Okay. So write down there application. Wien's displacement law application. It helps us to determine the temperature of a distant star. It helps us to determine the temperature of distant star.
Let's do one numerical based on that. Okay. Should I done one question? Right. The wavelength for which maximum energy is emitted by a star, the wavelength for which maximum energy is emitted by a star is equal to 501 nanometer. Sir, maximum energy. Maximum energy radiated by a star or maximum energy emitted by a star is equal to 501 nanometer. Correct? Sir, you are lagging. Maximum energy emitted by a star is 501 nanometer. Find its temperature. Find its temperature. Do it quick. Okay. See the answer. So lambda mt is equal to constant. Constant is how much? 2.89 into 10 power minus 3. SI unit. Huh? And lambda m is already given to you. So T only you have to find out. 2.89 into 10 power minus 3. Lambda m how much nanometer I told? 500? 1. 501 nanometer. Nano means 10 to the power minus 9. 9 meter. Then if you solve it, you will get 5, 7, 7, some number here, approximately this much Kelvin. Approximately this much. If it is coming 5, 7, 6, 8 something, also that is correct, no problem. Okay. Almost सर this पॉइंट करके लिखिले भूल हेजिवो no problem. You can write it 5.7, then into 10 per 3 it will be Kelvin, no problem. This is the more 100% correct 5.7 and 10 per 3. I didn't write more decimals, so have the confusion is there. Okay. यस सर So you would understood what is black body radiation curve and what is Wien's displacement law. I think in the statement we didn't mention in the black body radiation curve. What statement I told you? The wavelength corresponds to maximum energy or maximum heat radiation Radiation. is inversely proportional to absolute Temperature. temperature of a black body. At last you mention of a black body. Okay. Of a black body. Okay, so this is about the black body. We got all the idea about the black body. Then now next to move to Newton's law of cooling. Madam, one important law is there that's called as a Newton's law of cooling, which many times also comes in exam. But one numerical in Newton's law of cooling is very famous. But again, you are listening here, the great man's name, Newton. Newton's law of cooling. Newton gave the law. Newton didn't leave a single chapter in physics without giving law. Okay, mechanics, starting from mechanics, now heat. After that, when a wave will come, also there is Newton's law. In 12th class, when we go, also not in physics, also in mathematics, there is Newton's law. Okay, calculus. Okay, it's Newton. So Newton's law of cooling. What Newton told, and always when Newton give the law, that law must be proved by some another scientist that it's wrong. Okay, this always also happens. No problem. But the man actually starting all theories, giving the idea, doing a start is very difficult. Changing it is very easy. Okay, comments on it is very easy. But the person first started all the laws and started thinking about everything. Okay, so Newton's law of cooling. What is this law? Newton's law of cooling. First, let's write the statement, then I will explain you what is this law.
Everybody write the statement Newton's law of cooling. The rate of loss of heat. The rate of loss of heat by a body is directly proportional to Sir, can you repeat? the rate of loss of heat by a body is directly proportional to the temperature difference between body and surrounding. Proportional to The temperature difference directly proportional to the temperature difference between body and surrounding. The rate of loss of heat by a body is directly proportional to the temperature difference between body and surrounding. Okay. So all of you got the law, but I know you can't able to understand anything. What this law tells actually? This law is telling that a body will lose how much amount of heat radiation that depends on the difference of temperature between body and the surrounding. If difference of temperature is more, means surrounding temperature is always a constant temperature. Surrounding is such a, it's an environment which temperature neither increase nor decrease due to local heat. तमे तम घरे मामा रोषे करवा स्टार्ट कले तबली भुवनेश्वर टेम्परेचर कोन बढ़ी जीवो गोटे टाउन रो टेम्परेचर कोन बढ़ी जीवो तमे घरे रोषे कले मामा बोली ना तेणु सराउंडिंग जो सब कांस्टेंट टेम्परेचर रहला तो कोन हैला एठी ना तमे गोटे बॉडी केते हीट लॉस करिवो से डिपेंड कोस तमने बॉडी टेम्परेचर ऊपर डिफरेंस ऊपर मींस बॉडी टेम्परेचर ऊपर तने हॉट वाटर अधिक लॉस करिवो ना कोल्ड वाटर ना लिटिल माने हॉट वाटर अधिक लॉस करिवो ना वार्म वाटर अधिक लॉस करिवो Sir, hot. Hot water. हॉट माने बुझ पड़छ त पूरा Yes, गरम sir. वार्म माने टिके उष्म थिबो हला वार्म टिके तुम जोतरे की फिंगर भी बुडी परिबो तमे बट हॉट वाटर फिंगर बुडी परिबोनी हॉट वाटर अधिक लूज करे बिका टेम्परेचर डिफरेंस टा मोर ओके ठीक है ए कथा बुझे पे मु तुमको छोट कथा रे कहूछ हला तुम सो सांग माने स्कूल जते बेले छुट्टी हो जाए स्कूल छुट्टी होला परे के सांग माने डिसाइड करन चला जबा चाट खाइबा चाट गोटे टेस्टी जिंस सब चाट खाया पे जानती सांग सांग माने चाट खाया पे जानती तो गला बेले कोन हुए डिसाइड करन चाट खाया को जबा बट एटा गोटे तममान कर वर्तमान जो टाइम टा मनुष्य लाइफ ता तीनटा स्टेज रे डिवाइड हिची सबले कहे तीनटा स्टेज कोन तीनटा स्टेज ना वर्तमान तुम जो स्टेज रे अछ तुम पाखे बहुत समय अछि सफिशिएंट टाइम यू हैव किन तुम पाखे टंका नै घरे जदी मागुछ पॉकेट मनी 50 रुपीस पापा दियो तो पापा को करछंदी बार्गेनिंग तुम से तो करछंदी हाउ 10 रुपीस दोछन 50 रो 1/5 करके 10 रुपीस दोछन कि 20 रुपीस दोछंदी कहछ ना अधिक देबिनी काले मो पुओ कि झियो नष्ट हो जिवो दैट्स आल्सो करेक्ट 100% करेक्ट यू शुड फील प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स जो माने एंटी करछंदी ओके तो वर्तमान तम पाखरे बहुत समय अछि किंतु टंका नै तमे जते बेले जॉब करिवो गोटे एज को पळे आसीबो जॉब करिवो जतले आमन को एज को पळे आसीबो सेले पाखरे टंका थिवो किंतु कोन थिवो Nine. समय नथिवो गोटे दिन थिला मोर मने अछि जतले गोटे सांगर कहबो आज मोर बर्थडे पार्टी अछि आज मु पार्टी देबी छेते हमको डाकिथवा जी मु राती 8 रे पार्टी देबी होटल टिके आस तो आमे जे कि दिन माने 5टा बेलु से होटल आगे बसतिबो ओके नल देन जाई ता घर आगे पहुंचेइतु केतेबेले जिबा बोली किंतु एबे जदी के सांग डाकुची
राति 8 आज पार्टी अच्छी आज समस्त आसब सी एकुटिया जाकि बसथिबो राति 10टा बाजिबो के लास नथिए से जन जन करी फोन कर डाकिबो से गुता मोर ए काम अछि से गुता मु मेडिसिन से गुता मोर ए प्रॉब्लम अछि मुटे सॉल्व करी जाउछि तुम अपेक्षा करथा हला आसी से पुनी सब तरबरे कि समस्त पळै जिवे तरबरे आसीबे तरबरे पळै जिवे जस्ट टू ओनली अटेंड फॉर्मालिटी पे आसंदी सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ a third stage of life को तुम इतले पळेबो सेतल कोन हबो who can tell me in the third stage of life when you will be old ସେତେବେଳେ ବଳ ନଥିବ ସେତେବେଳେ पैसा थिबो पाखरे पैसा थिबो समय थिबो किंतु आउ से जोश नथिबो कि आउ से बळ नथिबो ओके सेतेबेले तमे बजे कोडे पार्टी कोडे खाइबे गोला वाला तुम प्लेट धरिया पे परमिशन नथिबो डायबिटीज थिबो ब्लड प्रेशर थिबो एटा खाइ देला असुविधा हिजो सेटा खाइ देला असुविधा हिजो तो लाइफ टा तीनटा स्टेज रे डिवाइड है ओके ठीक है बटन तर्तन स्टेज रे तमाने चाट खाइ पे चाट दुकान कर चाट दुकान गोला से कोन कला तुम चाट देला चाट खाइ जाइछो ओके अच्छा मते को जदी 2 जण संग चाट खाइ जाइछंदी तंग भितर टंका किए दबो चाट दुकान को टेल मी प्रैक्टिकल फिर जे कहि थिबो चाट खाइ होची बस ये तो मते तो लागु छै एटा ठीक कथा नय केन बेले सानवन टाकी लेना से जे लास्ट वंचित हो से दे के आसीबो हां से जे लास्ट वंचित हो से दे के आसीबो जे लास्ट 2 जण संग खाइ पे चाट जाइछन ये चाट खाउची से चाट खाउची के तांग भितर आगे पैसा दबो जे आग खाइ सरिबो yes told the correct thing 100% correct thing जे practically realize करिछि से सेटा जानिछि ओके तेन जे आगे खाइ चारिबो से फॉर्मालिटी दृष्टि आगे पर्स रु पैसा बाहर करके दबो ओके सेही भले सिचुएशन देखो हमें भी न्यूटन्स ला आराम रे बुझिबा मु कोन कहछि ना चार दुकान चार देला दियन जक पर फुल प्लेट चार धरचंती स्पून पडिछि तो प्रथम बाइट जोटा खिया हबो पूरा स्पून बुडे की भितरे पूरा स्पून रे भर्ती करके डबल स्पून अमाउंट रे नेकी पाटर भर्ती करबो तापर जेते बेले खाइबो आस्ते आस्ते फास्ट फास्ट के बेसी बेसी खाइ दबो जेतले तमरे इच्छा नथिबो पैसा दबा पई तो चाउ नथिबो मु टंकाटा चाट दुकान के दिए बेली हला सीए दो मु देबिनी ताले तमे कोन करिवो कोन ट्रिक ता सेते बेले कि मते कहि परबो सर स्लो खाइबा स्टार्ट हो तापर स्लो तमे ता प्लेट को नेबो ता प्लेट केते अछि ता तमर स्लो खाइबा स्टार्ट करिवो आगुरु दीदीटा आलू पाटर भर्ती कर दोथलो एबे गोटे आलू को कोन करिवो ना दी खंड करिवो फाळे खाइबो फाळे रखिवो तबे टिके समय परे गोटे आलू को तमे 4 पीस करिवो तम अनै तो किंतु तार आगे सरी जाऊ से आगे हाथ धोइले फॉर्मालिटी दृष्टि से आगे टंकाटा बाहर करिवो तो एमते तम मन चालू त माने मते कोन कहया को चाहनी देखो इट बटन तमे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बुझ पाइबो रेट ऑफ ईटिंग टा कहा ऊपर डिपेंड कला प्लेट रे केते चाट अच्छी प्लेट रे केते चाट अछि रेट ऑफ ईटिंग टा डिपेंड कला प्लेट रे केते चाट अछि जेमिति चाट सरी सरी के जाउची तमरा रेट ऑफ ईटिंग टा भी सेमति कोन होची स्लो होची कमी जाउची बुझल कमी जाउची हला तो एग्जैक्ट से भलिया तुम घर को गेस्ट आछचंती तमे ताको चा कप टा देला पीबा पई गेस्ट कोन कले चा कप टा देला तुम केते टेंपरेचर चा कप टा देला सपोज 80 डिग्री सेल्सियस देला ओके तो बहुत जोर ता भीतर पूरा बांफ बाहर से चारु गेस्ट कोन कले तो पी पारिबेनी से अपेक्षा कले बा बसे गपुचंदी तांकर नजर नाही तो सेम समय रे से टी वर्तमान जो हीट रेडिएट करूची सबटू मैक्सिमम थिबो ना मिनिमम थिबो मैक्सिमम थिबो कांता टेंपरेचर बटन पूरा हायर अछि पूरा बहुत जोर से हीट रेडिएशन करिया स्टार्ट करूथो बट जितले त टेंपरेचर खसी खसी आसीबो कमी आसीबो ता देहरो हीट रेडिएट करिवाटा आस्ते 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 कमी जीवा अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग न्यूटन के जेते टेंपरेचर कम थिबो हीट रेडिएट करिबा सेही रेट रे कमी जाउथिबो से अनुसार अधिक हीट आउ रेडिएट करिवो नाही
तन चाटा हॉट रहिबो कम समय बट वार्म रहिबो उषुम रहिबो बेसी समय चाटा कितले से पीबेनी मन कर तथापि पिउ नाहंती त चाटा देखि बेसी समय उषुम दिबो काना से भी हीट रेडिएट करिया कम जाई छै ना I hope everybody understood Newton's law of cooling. एबे स्टेटमेंट समस्त बुझी पड़थो पढिले ना Yes, नहीं sir. Yes. Yes, sir. rate of loss of heat means minus dq by dt is directly proportional to temperature difference between body and the surrounding T minus T naught. This is the mathematical expression. जो कि T टा कौन लिखी दियो कि T टा को टेम्परेचर T टा का टेम्परेचर ऑफ बॉडी T naught टा का टेम्परेचर Surrounding. Surrounding. এটা না রেট অফ লস অফ হিট বাট মই থেকে ଗୋଟେ নেগেটিভ সাইন ଦେଇଛି মতে কি কই परिबो why I put a negative sign Sir, can a loss of heat हो जे? heat টা লস হচ্ছে হিটটা কমি কমি কে যাচ্ছে সেপে মই ଗୋଟେ নেগেটিভ সাইন ଦେଇଛି ओके তাহলে ଗୋଟେ কনস্ট্যান্ট এটি মল্টিপ্লাই করিবা আমি কোন সে কনস্ট্যান্টটা k minus dq by dt is equal to this k whole into t minus t naught okay तो मतलब वो माइनस जो dq by dt लिखिस मु ता जगह लिखि परिबी की mc dt q is equal to mc delta थीटा तो मान कर माने अछि Sir, आपनकर Sir, आपण म्यूट रे अछंती. so understood now minus mc dt sir एठी state ता change होनी. Sir, स्टेट माने चेंज ना ना खाली गोटे बॉडी टी टेम्परेचर लूज करूछ माने हम गोटे स्टेट रो आउट स्टेट को जाउ नै हला yes sir. ठीक अछि ए चाटा ठंडा हवा ए बेला सब न्यूमेरिकल हॉट वाटर टा ठंडा हबो हला एंती Yes sir. by dt k t minus t naught so implies that dt minus t naught minus k by mc into dt understood okay Yes, sir. then this is one formula one expression between the derivation which will be used for numerical this is the importance of the Newton's law of cooling derivation okay then integrating both sides diput ko integrate kar dt minus t naught minus k c integration dt okay now you see 1 by x dx integration कार मने अछि इंटीग्रेशन फार्मूला 1 by x dx integration The ln x. good जार मन नथिबो मन पड़ी गला किंबा तमे टिके कैलकुलस रो वीडियो टा टिके देख दबो हला so log x base e means ln x this is the formula this formula is applied here see 1 by x dx so similarly it will be ln base e t minus t naught okay understood ln x minus k by mc dt integration is t plus c is constant as I am not giving any limits that's why I wrote here integration constant that's the c so implies that so this one will be used again so here each line is important in this derivation so logarithm जदि मैं पट रिमूव करबी सेपट को नेबी समझ जानि छ logarithm सेपट को पळै गेले सेपटा कोन हे जिवो Anti logarithm. no exponential
e to the power minus kt by mc plus c. अच्छा ये c c दिखा गया मैं c डैश दे दूं जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो c डैश दे दूं लेकिन तो c डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट. So implies that t is equal to t naught plus e to the power minus kt by mc plus c dash. Over. So this is the temperature of a body at any instant t. So we'll draw. This is equation number 1. This is equation number 2. This is equation number 3. In equation 2, you see just equation 2. For the variation between this and this, log e t minus t naught and kt. Who can tell me what is the variation? Who can tell me what is the variation? It will say this one and t. Let's draw a graph actually between them. So the variation between log e t minus t naught versus t. What is this variation? You see. So equation 2 is just similar to which equation? Am I correct? Yes, sir. Y is equal to mx plus c. जो ठीक है एडा y रो रोल करूची t टा x रो रोल करूची y is equal to mx plus c. Right, equation 2 is similar to the equation y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c for the variation between dash and dash. For the variation between log e t minus t naught versus t. For these two variations. Equation 2 is similar to the equation y is equal to mx plus c for the variation between this versus this. This play the role of y, this play the role of x. Then other part is slope. You know this is slope. About this equation I have told you everything in kinematics chapters. If you have remembered, general graphs. Then this is the constant. Yes. Let's draw a graph between y and x. All of you draw the graph between y and x. Draw the graph between y and x. This schedule will take log e t minus t naught, and here you take t. Slope is what? The negative. Slope is negative. How the graph will be? All of you try, because you know the general graphs before graphs in motion. मैं तुमको explain करी थी वो general graphs वो class करती के बड़ा सबूटी help करियो बोली physics रे. All of you draw it. So how the graph will be? Slope is negative. You see minus mx. This graph is, you can write also here it is like this. This graph is similar to the equation y is equal to minus mx plus c. Better you do like this. Slope is negative and y-intercept is positive. Y-intercept positive means it will cut y-axis in positive and the slope is negative. So this is the graph. Okay. Car graph correct thila? Okay. So now you understood. So this is the graph, Newton's law of cooling. This much. But exam recon question in Newton's law of cooling. Question kon asibo exam re. Now let's discuss the question. Question kon exam re asibo. But a बहुत interesting question. सब बड़े exam re ase. Hot star. 3 marks में question सब बड़े exam re asibo. Also inside the book ro exercise will be a very important question.
So all of you do this question. Question number 11.8. Question number 11.8. All of you do. A pan filled with hot Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes. When the room temperature is 20 degrees Celsius. Example 11.8. Okay. Do it quick. (94 to 86). It will take 2 minutes. Then 71 to 69. It will take how much minute? And surrounding temperature is 20 degrees Celsius. Hope all of you got it. Do it quick. Okay, so this is a very good question. Let's get its solution. So in hot food 94 to 86 हवा पे 2 minutes लगेगा तो 71 to 16 हवा पे कितना समय लगेगा? तो टेम्परेचर 20 हां फॉर्मूला अकाउंट करते तुमको इक्वेशन 1 मु हिंट्स भी तुमको दे देछि dt by t minus t naught minus k by mc कौन दिला dt. Is it the equation? Yes, sir. Okay. देखो फर्स्ट केस 1 हमें केस 1 करबा ए केस ता फर्स्ट लिखबा मते को डिफरेंस इन टेंपरेचर केते हला 94 to 86 So 8. it is 8. Good. बॉडी रो टेंपरेचर केते बॉडी रो 94 to 86 को आसी त हम बॉडी रो टेंपरेचर केते नेबी टेल मी. So 94. 94 नेबी नहीं कि 86 भी नेबी नहीं. एनी सजेशन? कारण 94 रो से आस्ते आस्ते कमी कमी 86 को पळै छै ना तबले मो बॉडी टेंपरेचर केते नेबी. So data average. Yes, 94 plus 86 by 2. 94 plus 86 by 2. Tell me how much it is coming. So 90. 90. So body temperature will be 90. Minus surrounding temperature 20. 20. Minus and the time is 2 minutes. Let's keep it in minutes. Huh? Minute 1000. According to solve कर देगी equation number कर दबा. So 8 by 70 minus k by mc into 2. Equation number 1. Then case 2. Case 2. Tell me what is the difference in temperature? So 2. 2. What is the body? In average 71 plus 69 by 2. So 70. 70 average minus 20 minus k by mc and this dt is our question. So this is 2 by 50. So minus k by mc into dt is our question. Equation 2. Divide equation 1 and 2. Divide equation 1 and 2. Then we'll get dt. Much. So dividing equation 1 and 2. So at last you are getting dt is equal to 0.7 minute. That means how much second? So 42 seconds. 42 seconds. Okay. Book example. Always comes in exam. Very good question this is. Similar question also you will find
Similar question also you'll find in exercise. Same question. Question number 11.20. All of you see. Question number 11.20. The body cools from 80 to 50 in 5 minutes and calculate the time it takes to cool from 60 to 30. Temperature of surrounding, you take 20 degrees Celsius. Okay. Let it be homework for you. So this question, 20 question of NCERT book is very important. Okay. So understood? So now Newton's law of cooling. But one problem was there in Newton's law of cooling. What problem was there? This Newton's law of cooling, तो starting रू कही छी, सब न्यूटन का लॉ को किए ना किए गोटे भूल रॉन्ग प्रूफ करिथिबो तो न्यूटन किए से ग्रेट मैन जे न्यूटन का लॉ को रॉन्ग प्रूफ कले सेल स्टीफन आउ जने साइंटिस्ट स्टीफन लॉ बोली खाली कहंती बा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोली भी कहंती स्टीफन न्यूटन का लॉ को लैटर रॉन्ग बोली प्रूफ कले रॉन्ग तो पूरा डायरेक्ट हमें कहि परिबानी सो कहले न्यूटन्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल when the temperature difference is small. न्यूटन का लॉ टा केवल एप्लीकेबल हबो जदी टेंपरेचर डिफरेंस टा स्मॉल हेतबो बॉडी और सराउंडिंग भितर यदि स्मॉल न हेतबो त न्यूटन का लॉ काम करबोनी तो तुम जो स्टेटमेंट रे लिखिथिलो मते कहबो स्टेटमेंट रे कोन लिखिथिलो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Temperature difference between the body and surroundings. temperature difference between body and surrounding provided the difference is less. Statement टिके समझ जोड़ी दियो when the difference is less समझ टिके जोड़ी दियो लास्ट को ओके तम डिफरेंस मु कहली से स्टेटमेंट रे तुम जो लिखिथिलो से लास्ट को खाली जोड़ी दियो when the difference is less लास्ट खाली टिके जोड़ी दियो got it Yes, sir. ताल डिफरेंस जदि अधिक sir, होइबो ताले less लॉ माने काम केते कह difference is less means 40 degrees Celsius general तंगर रैंक थिला हला बट हम के लेस लिखिबा because it varies from book to book okay तो टेंपरेचर डिफरेंस ता अधिक होई जिवो ए लॉ काम करी जदि ए लॉ काम करिवन ताल तापर को लॉ असला स्टीफन का लॉ देखो स्टीफन्स लॉ देन राइट डाउन स्टीफन्स लॉ स्टीफन कौन लॉ देले स्टीफन्स लॉ all of it are down स्टीफन्स लॉ स्टीफन का लॉ ता कौन थिला it states that the amount of it states that the heat radiation emitted by it states that the heat radiation emitted by a body the heat radiation yes it states that the heat radiations emitted by a body heat radiations emitted by a body for unit area for unit time unit area per unit time the heat radiations emitted by a body per unit area per unit time is directly proportional to fourth power of absolute temperature of the body is directly proportional to fourth power of absolute temperature of the body. Sir, unit time पर कौन कहले? It states that
the heat radiations emitted by a body per unit area per unit time is directly proportional to fourth power of absolute temperature of the body. Okay. Fourth power of absolute temperature of the body E directly proportional to T to the power 4. But a constant multiply karibi. Constant sigma. Sigma is called as Stephen's constant. Sigma is called as Stephen's constant. Jar value hochi 5.67 into 10 to the power minus 8 SI unit रे. SI unit ले कौन हेतुवा? Watt per area per temperature. Kelvin to the power 4 होगा sigma टा. Okay. So this is the Stephen's law. Understood? Yes, sir. सर So this एठी is एरिया टा कोठी लेखिले माने area टा it होची E is not energy. E is the energy per area per time. यस सर ହେଲା energy टा E होची energy per area joule per area per time. But joule per time टा को मु कौन कर देली watt कर देली ହେଲା खाली Sir. मीटर स्क्वायर तळे रहला आ एपट केल्विन टा गला टू द पावर 4 होला. This is all about the heat transfer. Chapter is now complete. Got it? Yes, sir.